Hello students, so the question is, an ideal gas expands isothermally from volume V1 to volume V2 and is then compressed to original volume V1 adiabatically. Initially the pressure is P1 and final pressure is P3 and the total work done is W. Then we have to correct the option. First option is P3 greater than P1, W greater than 0. Third option is P3 less than P1, W less than 0. Third option is P3 greater than P1 and W less than 0. And fourth option is P3 equal to P1, W equal to 0. Now this question is based on the chapter Thermodynamics. So in this question, let us draw the PV graph. On the y-axis we represent pressure, on the x-axis we represent volume. So it is written that first the gas is at initial state A. Suppose here the pressure is P1 and volume is V1 and it is expanding. That means its volume is increasing isothermally. So the graph for isothermal is in this way and it reaches to the point B. Here pressure is P2 and volume is V2. B is its final state for isothermal process. Now after reaching the state B, it will compressed back as it is given in the question. It is compressed to its original volume V1 adiabatically. So let us draw the adiabatic curve. Now we know for adiabatic process, the slope is always greater than isothermal process. That means to draw the adiabatic graph from B point, we have to draw a line of larger slope. That means towards this point, so that the volume will be same. This is C point. Here the pressure is P3 and volume is V1. Volume is V1. The process A to B is an isothermal process and the process B to C is an adiabatic process of greater slope. Now we have to determine which pressure is greater, as it is indicating here that the pressure P1 is at this point and the pressure P3 is at this point, which concludes that P3 is greater than P1. And what about the work? Now you are seeing that W2 and suppose it is W1. W1 is in positive and W2 is in negative because in W1 the gas is expanding. So work done by the system is positive and work done on the system is negative. W1 is positive and W2 is negative. And in magnitude wise, W2 is greater than W1 because the area under PV graph BC is greater than the graph AB. So that means the net work done is negative because the magnitude of negative work is greater than the positive work. So that means our correct answer will be third option. I hope that answers your question. Thank you. The PV plot for two gases during adiabatic processes are shown in the figure. Plot 1 and 2 should be respectively option 1 helium and oxygen, option 2 O2 and helium, option 3 helium and argon, and option 4 O2 and N2. So if we look at this point, we can see that the slope, let's call this point O, slope of process 1 at point O is less than slope of process 2 at point O. Now for an adiabatic process, we know that PV to the power gamma is equal to constant. If we differentiate both sides, we get dP into V to the power gamma
plus P into gamma into V to the power gamma minus 1 into dV. Since C is a constant, its differentiation is equal to 0. Upon rearranging, we get dP V to the power gamma is equal to minus gamma into P into V to the power gamma minus 1 into dV. Upon rearranging, we get dP upon dV is equal to minus gamma into P by V. Now this term dP by dV is the slope of this PV graph. Considering point O, the slope at point O, that is dP by dV at O, will be equal to minus gamma into, let's call this value P by C is equal to K. For the both the processes at point O, P and V will be same, therefore we have taken P by V is equal to a constant K. Therefore we can say that dP by dV at point O is proportional to gamma. That means at point O, the slope is directly proportional to the value of gamma. Now gamma is equal to 1.67 for monoatomic gas, and it is equal to 1.4 for diatomic. This means since the gamma value for monoatomic is greater than the gamma value for diatomic, the slope at point O for diatomic gas is less than the slope at point O for monoatomic. This means here, since we have shown that slope of process 1 is less than slope of process 2, if we compare these two, we have slope of process 1 at O is less than slope of process 2 at O. We can say that the process 1 is for diatomic gas, whereas process 2 is for monatomic gas. So process 1 is diatomic and process 2 is monoatomic. Therefore, if we look at the options, option 1 says that process 1 is helium, which is monatomic, and process 2 is for oxygen, which is diatomic. That is incorrect. Option 2 says that process 1 is for diatomic, that is oxygen, and the process 2 is for helium, which is a monatomic gas. This is the correct answer. And option 3 and option 4 are also incorrect, because option 3 says that both the gases are monatomic, that is helium and argon, and option 4 says that both the gases are diatomic, which is also incorrect. So the correct answer to this question is option 2. Let's look at the question. Starting with the same initial conditions, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if is purely isobaric, and W3 if purely adiabatic. Then और हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि एक गैस है
जो इनिशियली क्या थी, सेम कंडीशन पे थी, और फिर वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 इन 3 डिफरेंट वेज। और वो 3 डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं? आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। ओके, और इन तीनों पाथ में जो गैस ने वर्क किया, हमें उस वर्क को क्या करना है, कंपेयर करना। तो सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक पीवी कर्व ड्रॉ किया है जिसमें मैंने गैस को एक्सपेंड कराया है फ्रॉम इनिशियल कंडीशन दैट इज पॉइंट ए फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ओके, और मैंने 3 डिफरेंट पार्ट ड्रॉ किए हैं। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा पाथ किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, तो इस स्ट्रेट लाइन पाथ में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये प्रोसेस डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। और क्वेश्चन में आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन को हमने क्या अज्यूम किया है, W2, तो मैंने यहाँ पे W2 लिख लिया। अब इन दोनों कर्व्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी स्लोप का डिफरेंस है। तो अब हमें क्या देखना होगा कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में किसकी स्लोप ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूँ isothermal process को। So PV is equal to constant. Okay, so PV is equal to constant, or now differentiating I can write P times dV plus V times dP is equal to 0. Okay, using product rule I can write this equation. So here I can write dP by dV is equal to minus P by V. Okay, नाउ अगर मैं बात करता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो उसमें क्या होता है, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो फिर से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई कैन राइट P इंटू गामा V रेज़ टू गामा -1, ओके, dV प्लस V रेज़ टू गामा इंटू dP इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट रूल यूज किया है। तो पहले P को कांस्टेंट रखा, V रेज़ टू गामा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, गामा इंटू V रेज़ टू गामा -1 dV प्लस V रेज़ टू पावर गामा को कांस्टेंट रखा, P की डिफरेंशिएशन dP इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं V रेज़ टू पावर गामा -1 अगर कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, V रेज़ टू गामा -1 गामा P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं dP बाय dV क्या लिख सकता हूँ, माइनस गामा टाइम्स P बाय V। ओके, तो अगर मैं अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों प्रोसेसेस की स्लोप को कंपेयर करता हूँ, अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड कंपेयर करता हूँ, तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि एडियाबैटिक की जो स्लोप है वो गामा टाइम्स आइसोथर्मल की स्लोप है। तो स्लोप किस प्रोसेस की ज़्यादा होगी, एडियाबैटिक की ज़्यादा होगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्राफ में लिख सकता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस की स्लोप क्या है, कम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 से रिप्रेजेंट किया था, और नीचे वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। ओके, सो अब मेरे पास तीनों प्रोसेस को मैंने डिनोट कर लिया है। अब हमें पता है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो आई कैन क्लियरली सी कि सबसे ज़्यादा एरिया किस कर्व के अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है। सो W2 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और उससे कम एरिया किसके अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर, और सबसे कम एरिया किस कर्व के अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर। तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ दैट W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W3। तो आई कैन राइट B ऑप्शन is correct. Okay, thank you.